Education is a fundamental right for every child, but not all children have the same learning needs. Some face challenges, like dyslexia or other learning disabilities, that require special attention and support. प्रॉब्लम ये है कि ये बच्चा एक नॉर्मल बच्चा है, हमारे और आपकी तरह है, क्लास में बैठा हुआ है, बहुत सारी पद्धतियों से जिसे हम सीख सकते हैं वो बच्चा नहीं सीख रहा। समस्या यहाँ ये भी है कि उस बच्चे को आप पहचानोगे कैसे। कई बार हो क्या रहा है कि आप उस बच्चे को कह रहे हो साहब ये तो स्लो लर्नर है, हम कहते ही हैं अपने घरों में, कहते हैं आपका बच्चा साहब सीखता नहीं, बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ कह के हम उसकी एक टैगिंग कर दे रहे हैं, अरे साहब क्या करें ये तो मंदबुद्धि है। मंदबुद्धि कह के हम उसकी एक अलग टैगिंग कर दे रहे हैं। हम वास्तव में इस लेवल पर नहीं सोच रहे हैं कि इसकी जो समस्या है वो है किस लेवल पर। क्या वो राइटिंग की समस्या है, क्या वो लर्निंग की समस्या है, क्या वो देखने की, सुनने की, बोलने की समस्या है, हम तो नहीं जानते। हम केवल इतना कहते हैं अरे मंदबुद्धि है भाई। Early detection of these disabilities can be the difference between frustration and success for a child. अर्ली डिटेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए अर्ली इंटरवेंशन की भी बात की जा रही है 0 to 6 years ऑफ द एज। फिर हम बात करते हैं कि जल्दी आइडेंटिफाई हो तो हम जल्दी कुछ ज़्यादा कर सकते हैं उस बच्चे के लिए, उस छात्र के लिए जो स्कूल नॉर्मल स्कूल गोइंग चाइल्ड है। बिकॉज स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है मेरे हिसाब से वो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ नॉर्मल रूप से करते हैं, सिर्फ उनका जो प्रोग्रेस है वो या अचीवमेंट है इन एकेडमिक पुअर हैं कंपेरेटिव टू अदर child in the same classroom. Teachers play a vital role in identifying early signs of learning disabilities. In the early years, it's very difficult to identify also because children by nature have different, they have their own nature. So it becomes very difficult to diagnose or identify that this is a child with special needs. If it's very obvious physically, you may be able to, but there are certain special needs like learning disability, you don't even notice until they are a little older. So, but the teachers, we have to be very observant, and that is how we can empower the teachers to be observant and have collaboration with the parents also, and the kind of thing can really help identify children at an early age. Teachers are often the first to notice when a child is struggling with reading, writing, or comprehension. वो किसी के अंदर में जानकारी है, झिझक है कि वो खड़ा होकर आपके सामने में उस चीज़ को बोल नहीं सकता है। किसी में है कि वो समझ ही, आप जो समझा रहे हैं आपके बात को वो समझ नहीं रहा है, ले नहीं रहा है। तो उसको फिर जब पर टीचर हम लोग 5 बच्चे 10 बच्चे सिलेक्ट किए क्लास में कमज़ोर चुन के, तो उसको बैठ के और अलग से क्लास देने में, समझाने में सहूलियत होती है। TLM के द्वारा, FLN किट के द्वारा, खेल खेल में कभी कभी होता है कि कुछ एक्टिविटी करा के समझाना। तो हमने क्या किया, एक पीयर ग्रुप्स बनाए थे बच्चों के, जो पढ़ने वाला बच्चा और जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा। फिर अब तुम्हारा काम है इसको पढ़ाना, जो हमने तुम्हें पढ़ाया वो इसको पढ़ाना है तुमको। 2-2 ग्रुप, उसमें क्या होता है जो नहीं पढ़ पा रहा है वो टीचर से डरता भी है, हम नहीं भी डरा रहे हैं तो वो डर रहा है कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं तो अब तो हमें मैडम कुछ कहेंगी ही कहेंगी। तो हमने कहा नहीं 4-4 का ग्रुप, 2-2 का ग्रुप इस तरह से बना के और एक तरह से रिमीडियल का काम किया। जोया जब स्कूल में पढ़ती थी, KG क्लास में भी उससे टीचर बोलती थी कि आपकी बेटी क्या कभी बोलती है? मैंने तो उसकी आवाज़ नहीं सुनी, मुझे सालों हो गए। मैंने बोला मैम ये घर पे भी कम ही बोलती है, मुझसे भी कम बात करती है, ये बचपन से ही कम बोलती है। Through timely observation and intervention, teachers can ensure that no child falls behind, but not all teachers are equipped to address these challenges. आप एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर की एक तुलना करके देखिए एक यूनिवर्सिटी के टीचर के सामने। तो यूनिवर्सिटी का टीचर एक बहुत ही लिमिटेड संख्या के बच्चों के साथ में डील कर रहा है। हमारी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा 25, 30, 40 बच्चे हो सकते हैं। प्राइमरी के कोई गिनती नहीं है, 5 भी हो सकते हैं और 300 भी हो सकते हैं एकल विद्यालय में। क्या एक टीचर के लिए ये संभव होगा कि उस स्कूल टाइम में उस बच्चे की हर हरकत को वो डॉक्यूमेंट कर सके? बड़ा मुश्किल काम है।
24 घंटे वो एक ही बच्चे पे ध्यान दे सके, ये भी बड़ा मुश्किल काम है। लिहाजा वो इसको एक ग्रुप कर देते हैं अलग किस्म का, जबकि बच्चों में तकलीफें दूसरे किस्म की हैं। This is where special educators come in. They are trained professionals, essential in tailoring teaching strategies to meet the unique needs of students with learning disabilities. स्पेशल एजुकेटर की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि उनको उस मास्टरी या डिप्लोमा लेवल पे ट्रेनिंग दी जाती है कि इन बच्चों का रिमीडियल कैसे करेंगे, हाउ दे कैन कोप अप विद द करंट करिकुलम एंड हाउ व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज कैन बी डन फॉर सच काइंड ऑफ पुअर लर्नर और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबल डायग्नोसिस। Their expertise allows them to break down complex concepts into digestible, manageable steps, empowering students to learn at their own pace. If I have to teach fruits, I can say the fruits. What are the fruits? Then the students will say that apple. I mean, a teacher will say that apple, mango, pineapple. Nah, but you will just wondering what is apple? What is? If we don't show the dealings or the pictures, flashcards, or whatever it is. We must have to show those pictures and then these dealings and all. After that, only they will recognize. Oh, this is apple. This is mango. Nah? If not, it's very difficult for them to learn. The journey doesn't stop there. Master trainers provide guidance and support to teachers, ensuring they are well equipped with the knowledge and techniques needed to support all types of learners. जिन बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं या ट्रेन करते हैं 2 साल की ट्रेनिंग में इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी कोर्स में, तो उनको 3 डिसेबिलिटी पढ़नी है: ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, जिस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए उनको पहले थ्योरेटिकल अप्रोच में हम लोग ट्रेन करते हैं क्लासरूम में कि देखो भाई ये इनका लक्षण होता है, ये इनके टाइप्स होते हैं, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया। आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, उसके लिए चेकलिस्ट है हमारे पास। पेरेंट्स से भी उनका इन्फॉर्मेशन डाटा कलेक्ट करेंगे। पेरेंट्स से राइट इन्फॉर्मर, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता उस बच्चे के बारे में, क्योंकि बच्चा आपके पास 1 से 2 घंटे के लिए ज़्यादा नहीं आता, बाकी समय पेरेंट्स के साथ रहता है। जो अलॉटमेंट ऑफ द चाइल्ड जब हम करते हैं, इम्प्लीकेशन पार्ट में हम बात कर रहे हैं, जब हम बोलते हैं 2 गोल सेलेक्ट करके आपको ये फ्रैक्शन के बारे में बताना है, तो फ्रैक्शन कैसे सिखाओगे आप? तो पहले बेसिक प्री रिक्विजिट क्या है बच्चे का, उसको जानना ज़रूरी है, और वो सुपरवाइज़र के निगरानी में होता है, जो मैं होता हूँ। वो आप गोल क्या सेलेक्ट करोगे, दैट विल बी डिसाइडेड बाय यू ओनली, बट विद द हेल्प ऑफ द सुपरवाइज़र। तो सेंसिटिविटी क्या है कि जब आप 2 गोल लर्न कर लेते हो 2 महीने में, तो आपको बड़ी खुशी होती है, पेरेंट्स इज ऑल्सो हैप्पी। ठीक है, मुझे भी सेटिस्फैक्ट होता है कि आपने 2 महीने में एटलीस्ट 2 चीज़ तो सिखा दी, मल्टीप्लिकेशन सिखा दी जो 1 डिजिट का उसको नहीं आता था, या फिर आपने डिवीज़न भी सिखाया जो उनका लू फॉल्स था, या टेबल सिखाया आपने, लोअर लेवल की बात हम करें, 7 का टेबल या 8 का टेबल कैसे सिखाया, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी वी प्लान एंड वी डिस्कस विद द पेरेंट्स। These trainers are the bridge between research and classroom practice, offering insights into the latest methodologies and tools for inclusive education. You know, in training, we are physically involved with the child, practical wise. So we spend a lot of time with our special needs children. So that experience itself, whatever we have experienced in our practicals, we can apply it here in inclusive setup or in a special school. So I think it's very beneficial for an educator to get in touch with the practical aspect then of the training, no? I think it's very helpful. Another key element is the use of well-designed learning materials. हम सब जानते हैं NCERT 3 तरह का कार्य करता है। एक तो हो गया टीचर ट्रेनिंग से संबंधित, एक हो गया एकेडमिक रिसर्च, और एक जो करिकुलम, टेक्स्ट बुक, सिलेबस, करिकुलम, ये सारे का डेवलपमेंट होता है। यानी 3 डायमेंशन पे, 3 डोमेन पे ये काम कर रहे हैं। वो नेशनल लेवल पे NCERT के द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ SCERT जो है राज्य स्तर पर एक दिनों काम करता है। Actually, we didn't bring out any separate material for children like with special needs. It's incorporated in our curriculum and in the learning experiences that we have developed for the teachers to, like we develop a teacher manual also, like exemplary materials where we have incorporated how they can identify and they can handle children with special needs. When teachers have access to appropriate resources, they can adapt lessons to suit different learning styles, making education more accessible for every student in their classroom. For example, this is my material.
my material is exact as the textbook. But for a child with special needs, for example, a child who has learning disability, the contents will be a little different. We will maybe minimize the contents, brief it out, maybe highlight the main points and only make them study the main points and understand that concept. So I think that is what we are doing here right now. To achieve this, the government is working to strengthen the system by training more special educators and enhancing the capacity of teachers through continuous professional development. हायर एजुकेशन में तो वही बच्चा जाएगा जो स्कूल में जिसको हम एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर दे पाएंगे। तो आवश्यकता इस बात की है। और देखिए, ये जो बच्चे होते हैं ना, SLD वाले जो बच्चे होते हैं, इनको एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और जो सामान्य शिक्षक होता है उसमें जो धैर्य है और इस तरह के बच्चों को ट्रीट करने की जो वो होती है, वो सामान्य शिक्षकों में स्पेशल एजुकेटर्स की तुलना में कम होती है। स्पेशल एजुकेटर्स इसी के लिए ट्रेंड होते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि इस तरह के बच्चों को चिन्हित किया जाए, और जब हम चिन्हित कर लेंगे तो हमको कितने स्पेशल एजुकेटर्स की ज़रूरत है इसको भी हम ये आंकड़ा भी हमारे पास होगा, और तब हम कैसे स्पेशल एजुकेटर्स को रिक्रूट करना है इस पर काम कर पाएंगे। However, to foster truly inclusive classrooms, it's essential to empower regular teachers with the skills not only to identify students with specific learning disabilities, but also to implement effective remedial interventions within the classroom. Yet there is always a need for a special educator. There is always a need for a person who can understand the child. But when it comes to implementing education in the classroom, the special educator and the general teacher, they find it a little challenging. Okay. In an inclusive classroom, the general teachers, they said that we have special children here, and these special children are to be taken care of by the special educator. And from the side of a special educator, they will say that no, we are supposed to teach them 1:1. We cannot teach them in inclusion. So that becomes an issue. By equipping educators with both the awareness and tools they need, we ensure that every child receives the support necessary to thrive. So over the years, we train them, we ask them to modify their lesson plans, and eventually they get it. That a teacher, a general teacher, is able to address the issues of the children present there along with other special children. And whenever the special teacher also comes, she is able to do the same thing. We use something called the micro improvement approach. So basically, whatever the situation the school is in, the school leaders and the community members, the SMCs, SMDCs, no matter what the situation is currently, with whatever resources they have, what interventions can they introduce in the school? Because these are going to be small changes, small tweaks. Say for example, if you're talking about one teacher has now, in a certain school has started this daily habit of making kids read a newspaper just before class, just 5-10 minutes, and they take turns. So just so that it helps kids develop the habit of reading. So there's similar interventions in mathematics. How do you make mathematics fun so that kids actually get over their fear and start enjoying math? So small interventions, but effective interventions on the ground, customized to the needs of the kids in the school, and it's a function of what is the current status of the school. So all these, I think these are steps in the right direction. The results are obviously going to take time, but we're confident that the results will show up. We just have to keep pushing. The government's role is pivotal in driving this transformation. The National Education Policy, NEP 2020, is a landmark reform that places a strong emphasis on inclusive education. Recently we have received NEP 2020. Now from the earlier policy, it is totally different. Though the focus is on the same, but it has a wider scope to think about inclusion, to think about disadvantaged group, to think about the languages. So in my opinion, this document will be a Magna Carta for the next generation, 21st century generation. Recognizing the diverse needs of learners, the National Education Policy 2020 calls for early identification and intervention of learning disabilities, ensuring
that children receive the necessary support from the start. Especially when we talk about the inclusion or inclusivity, the goal number 4 regarding the equitable and inclusive education and quality education plus lifelong learning opportunities for all. So there is no, we can say that no confusion what is to be done at early stage and what is to be done at higher education. The students are saying, of course, despite their age, they are more younger in higher education and they are very small in school education or early childhood. But ultimately they are the students and our role is to impart education to them. The policy also promotes the use of assistive technology, flexible curricula, and alternative learning pathways to ensure no child is left behind. Necessary support system has to be created, both in terms of detection by the teachers or the educators, and secondly, the support system. How do you really involve them in learning? And today, technologies are capable of doing that. Many of the learning can be through the intervention of technology, be it augmented reality, virtual reality, metaverse, extended reality, animation. I think there are various things which can be showed to these children, and they will learn faster than in the normal classroom mode where the teacher is writing something on the blackboard. So that is where it is required. By prioritizing curriculum adaptation and promoting inclusive teaching practices, the National Education Policy 2020 is helping schools create a supportive environment where children with learning disabilities can thrive side by side with their peers. मैम पहले वो स्कूल जाने के लिए उठती नहीं थी, बहुत नहीं जाना है, मन नहीं है, ऐसा करते। लेकिन जब सोच फाउंडेशन आया, स्कूल जाने के लिए एक अलग ही रुचि उसके अंदर आ गई कि हाँ मुझे स्कूल जाना है। वो इसलिए लगता था क्योंकि धीरे धीरे पढ़ाई में उसको मन लगने लगा था, उसको हिंदी पढ़ना आने लगा, उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ रहा था। We have to bring everyone in the stream of education, and education is the main tool or greatest tool to bring social justice and equality. A teacher would inherently know if there's a certain issue with a certain kid, because the kid could be very laid back, he or she might not interact with other kids. So they might intuitively know that, okay, there is something with this kid that needs attention. With the specific input that we're giving them in terms of how do you identify a kid with an SLD, and how do you sort of, what sort of interventions you take. So that's actually helping the teachers over a period of time, and though it might have been initially viewed as another training, but then now, given the enormity of what is at stake, they do understand why this is needed, and they're making their best efforts to ensure that there are no issues whatsoever. Some of the what we call most ingenious brains in our planet, including scientists like Einstein, they were all dyslexic. Had they been not given proper support either by their parents or by their school teachers or high school teachers, I think they would not have got to this way. And therefore, this is a very important issue which we must do a lot of advocacy. Achieving truly inclusive classrooms requires collaboration from all stakeholders.